গুড মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমি সায়ন্তন আমি পায়েল। আর তোমরা দেখছো সায়েল স্টোরিজ। আজকে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এমন একটা প্রপার্টিতে যেটা আমরা না হোমস্টে বলতে পারি না হোটেল বলতে পারি। এটা ইটসেলফ একটা কোলাখামকে ডেভেলপ করার একটা প্রতিষ্ঠান বলতে পারো। তো এটার সম্বন্ধে আজকে আমরা তোমাদের ডিটেলসে বলবো, শুধুমাত্র এই প্রপার্টির সম্বন্ধে। তাও প্রপার্টি ওনার আঙ্কেলের মুখ থেকে সমস্ত কিছু আমরা শুনে নেব। আমরা যতটা বলতে পারবো উনি ভালো বলতে পারবে। তো আমরা ওনার মুখে ফোনে শুনে অনেক অ্যাট্রাক্ট হয়েই জায়গাটাতে এসেছি। আশা করছি তোমরাও অনেক কিছু জানতে পারবে এবং তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। তো ডাইরেক্ট চলো ওনার মুখ থেকে শুনে নেওয়া যাক। आइए आइए मोस्ट वेलकम नमस्ते 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 अंकल। So I am a village level entrepreneur under the Digital India program. Village level entrepreneurs, they are basically the connecting points, the services of government to citizen which are not available to the locals of rural India. They are the enablers for providing those services, like we do banking services here, insurance services here, Aadhaar card, PAN card, e-Shram card, cash withdrawal, air tickets, train tickets, and the host of services, government to citizen services that we do. This section of the building, it houses the reception and the digital seva kendra. And the second section of this building, so these are the citations and certifications of what all we do here. এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমরা প্রথমবার দেখছি, স্যালন। Kolakham doesn't have a salon. We are dependent on lava for everything, or on Kalimpong. So with little effort, because locals are very talented, they know a lot of skills they have. Why not create a small place where we can have these facilities? And the idea started from a group of solo travelers, ladies who came here. They were all Bengalis and they had long hair and they needed some help in doing their braiding. And the girls here, because most of the staff is from almost everyone is from this village itself, and we work and employ the ladies more than gents or families. Because we in spirit of the village level entrepreneurship and Digital India program, we try to empower women more. And put income in their hands. So that's how it started, and we have set up this small thing, and we are trying that because the Nepalis, their sense of fashion is very good and very bright, and they do multiple types of braiding, and this is what I have also done. This is not my आपका हेयर बहुत अच्छा है। Thank you. आपका मेन मोटो है गांव के लिए कुछ करना। जी जी। The development of Kolakham itself. जी, I have taken an early retirement from work. I was director with PricewaterhouseCoopers in the risk advisory services, and I was based out of Nairobi, Kenya. And I have worked in 72 countries, and I have come back here, and I took an early retirement from work. Over a period of time, somehow I am not able to adjust in city life also now. So it is better for me to be living in a remote area like this, where there is no pollution. We eat organic, everything, and the people are in need of someone who can enable them, train them, and that's what gives pleasure to me. Okay. So this building has been designed by me entirely. It's a green building. We don't waste anything here. Okay. The leftover food goes to pigs that we have on the farmhouse. We have honey farming here, honeybees, and we have plants nursery here. It's a combination property. I am feeling a lot of pleasure in sharing this, that this building runs purely on solar energy, and the inverters that we have imported are from Germany. This is 5 kilowatt, this is 5 kilowatt. Throughout the day they produce energy which we consume. We do our cooking also on solar cookers, and these are the batteries which work as backup for night time. When there is no sunshine, then we use these batteries. And in the event of we consuming more energy and the batteries finishing off, for that purpose we have a small generator also, which is a petrol based generator. But we till now we have used it only for 20 hours. People often ask me that what is this Himalayan retreat all about, and what does this mean? The Himalayan retreat for me means my retreat from the corporate and metropolitan life into rural India. From the tourists' point of view, it is their short retreat, their short break to rejuvenate themselves,
they come to this retreat, so they take a retreat from their work life. And this logo has been painted by two local ladies here. They're teachers in the local school here, and they have done it as a part-time thing. And there's a painting, live painting also, which is also done by them. Okay. So we call it a live painting because it's a what from a distance as a wholesome thing, including the painting, the plants, and the tree in Sky. the backdrop and the sky. It's mesmerizing. Right. Yeah. So this is our cafe. We call it Cafe Himalayan Hotpot. The design of the building is such that we have a compound as a centrally located compound, and everything is surrounding that compound. And this cafe is it's basically inspired by Ganesh Talk in Gangtok. Ganesh Talk is a circular shaped building, so we have also made this circular shaped building. This has 20 bay windows. All the windows are connected with each other. And we can open like this. Makes it a perfect viewpoint. And what we can see from here is the Pakyong Airport, the city of town of Ranok. Today Zuluk is also visible. Mount Kanchenjunga. We can see Reshi River. We can see lava from here and Reshap from here. Okay. This place has a low-lying sitting with very broad sitting area, so that if someone wants to sit in a relaxing manner, you know, जैसे हम पलाथी मार के बैठते हैं, चौकड़ी लगा के बैठते हैं, or they want to lie down, and you know, it also doubles up as a Sabhagar, as a meeting point where locals, when they have to do their society meetings or community meetings, those are organized here. This place has a fireplace because sometimes it is raining, and if there's a need to do a campfire in an enclosed environment, we have that. These walls are supposed to be they are meant for displaying arts that is done by locals or by our tourists. Acha. Okay. And so far we have some sketches Yes. here available. This is Leonardo da Vinci, Edison. A tourist was kind enough to do a sketch of mine. This is me. You look so handsome in the picture also. Thank you. And this is the best part of this property. We have a small library in the other section where tourists can pick up books here and they can read books here. We have board games here, Ludo, Saap Sidi, Scrabble, other games which kids, when they come, they can enjoy. The more savvy kids who are into video games, we have Xbox for them. They can use That's interesting. they can use the Xbox. And we have karaoke here. So we do musical nights here, musical events because you know, what I have observed is that the tourists, mostly they are from Bengal, and Bengalis are artistic by nature. They are either into singing or into sketching or into cooking Dancing. or into कलाकार होते हैं बंगाली लोग. so it makes a lot of sense to have a place where you know, we have these kind of activities that can be done by tourists. And in this compound we have these prayer flags. It makes it a perfect serene environment, very peaceful. And this property is off the road. We are not on the road. One has to take down 40 steps, come down, and then we are away from the road. There is no noise as such. Let me take you to the terrace now, which is the terrace of our cafe, and it is called Silent Valley Havaghar. It's a viewpoint. Acha. Some tourists who come here, they also call it the balcony of Kolakham, Okay. because the entire Kolakham is visible from here. The location is such that there are 360-degree views everywhere. There is a view. Mount Kanchenjunga, Sleeping Buddha, K1, K2, K3, and we are planning that we can arrange some treks to Reshap from Kolakham. We are trying for that. We are in touch with locals and how it can be done. This place is basically a tri-junction of Sikkim, West Bengal and Bhutan. So this is Neora Valley National Park on this other side. Okay. And a trek through the forest, which involves overnight stay also, will take you to Bhutan. But now the trek is closed because this place has spotted tiger since 2017. Acha. Tiger has been spotted thrice because this Neora Valley National Park, it has boundary with the
Pangolakha Wildlife Sanctuary in Pangolakha, Sikkim and Tusta Strict Reserve in Bhutan. So Okay. together it makes a large habitat, and sometimes tigers from other location they stray into this part of the forest. And you said Bhutan is about 20 km away from here. These are the local kids who are getting some tuitions right now from Deepa Bhabi. She's wife of our manager Harshpal Singh Rawat, and she teaches them. Hello. She's the brightest one. Oh, तो भाई को नाम क्यों? अंकिता अंगिता. भाई संडे लिखो, मंडे लिखो, MONDAY AY. शाबाश. Srijna's Fair Price Shop. Please come. She is into multiple things. She's a YouTuber. She's a blogger. She is a choreographer, and she organizes treks and tours also. She goes for these kind of events with tourists if required. She runs this shop also, and she's member of Nari Kalyan named self-help group. And besides that, she is also a paralegal volunteer under the Digital India program. ये मेरा छोटा शॉप है, सभी मिला के रखते हैं ताकि सबके लिए हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे ऑर्गेनिक कार्डामम है, ये यहीं का और इसी साल का है. ये हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलके काम करते हैं. तो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ये काम करते हैं कि ये LED बल्ब असेंबल करते हैं. ये हम सभी इसके हर एक प्रोडक्ट लेके हम लोग खुद ही बनाते हैं मिलके. ये हो गया पीड़ा. ये है आपका मेज मक्के का पत्ते का है, और ये है आपका मक्के का जो कवर होते हैं मेज का कवर के है, और ये लीफ के है. अच्छा. बोलते हैं कि इसमें बैठने से काफी सारी बीमारियों की भी इलाज होते थे. We believe art is a therapy, and when tourists they come here, they can indulge in some form of art, and whatever they have created, they leave it behind, and then we sell it to the other tourists to generate income for locals. And these are some of the pieces of art. This is dot mandala. It is done by a tourist. So besides the handicraft part, what Srijna brings on table is that we have set up a last mile connectivity with the online sellers like Amazon. Now we have a setup in Kalimpong where we have an address where these things get delivered. Because these companies are not delivering here in Kolakham. And then she has a tie-up with the what they call is Dai or Kuli, who will pick it up, and then our service vehicle of this village, which comes from Kanchan Cinema Hall, Kalimpong every day. Those things are loaded onto that vehicle and they are brought here. So what she does is that she now shows her products online to the locals. They can make a choice that I want this pair of jeans or I want this bag, and she orders for them and she charges a convenience fee for that. So looking at the size of the store will not really do justice to what kind of work she's doing. She's doing a lot using the online platforms. Okay. So congratulations. बहुत बड़ा हो ये दुकान. So we will also be taking you to the nursery here, which is called Green Bliss Plants and Pot Studio. Tourists, they can carry these plants with them, and we also send these plants by courier to all the places. And this is the packing that is used for packing these pots. It can carry 6 pots. I'm very keen to show a special plant to you, which is called air plant. Its roots are in the air. There is no soil that is used, and this is the air plant. Oh, Wow. so nice. It gets its nutrition from the moisture in the air. This is the residential building, and each room has a name. This room is called Sevani, the other one is Kedranche, then there is Fapulo. Basically these are greetings in different languages of different dialects of Nepali tribes. Like Sevani is Namaste in Rai language. These are all solar lights. This is a motion sensor light. In the night it senses that someone is passing by and it lights up.
This is a small library, a computer room, a Sarkari Pariksha Kendra. We call it Kolakham Gyan Jyoti. It has its own website also, kolakhamdsc.co.in. So one can do these 130 plus exams here, practice tests, current affairs, prepare for live tests. And this is again kitchen garden. And we have angel's wings here to take photographs. This part of the staircase, which is compound with 1, 2, 3 walls, is going to have art also. Beside the art that will happen on those 3 walls and this wall, in future we are also going to do graffiti on the entire outer section. There's a huge wall in the boundary of the building. We'll create an event where people can come and do graffiti here. Okay. This is the plants nursery. We propagate plants here, which are then further sold at the section we have shown you before. এটা ওর ফেভারিট জায়গা। এখানে এসে যারা গাছ ভালোবাসে তাদের সারাটা দিনই কেটে যাবে। সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ, তার সাথে এত গাছপালা। आप लोग ये सब संभालते हैं नर्सरी? अच्छा, तो बहुत तरह तरह की पौधा है ना इधर, साकुलेंट से लेकर Succulents और ऑर्किड, सीजनल Seasonal flower। सभी है। अच्छा और अच्छा, इसमें वो टूरिस्ट भी आके पेंट कर सकते हाँ हैं? जी, ये टूरिस्ट के लिए रखा हुआ है। 1-2 आगे रेडी है, ये इसको रेडी करना है। तो हम भी एक कर सकते हैं? हाँ जी, आप कर सकते हो। हाँ, आपके लिए मैं चूज कर दूंगी, है ना। ओके। Everyone appreciates this colorful building, vibrant colors. This is the man behind the color here. He is the one who has painted this entire building. He handles the digital works. Besides that, he handles the art studio अच्छा। and all the activities that are done here. मेरा नाम मनीष राय। मैं सबसे पहले आफ्टर स्कूल में यहाँ पर नेवरा वैली नेशनल पार्क के अंदर ट्रैकिंग कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने बर्ड वॉचिंग भी किया है। फिर उसके बाद साइकिल कंपनी में काम किया। फिर उसके बाद मैं नेपाल गया एज अ टीचर। 7 इयर्स तक काम किया नेपाल में। फिर उसके बाद मैंने जैसे शादी किया कर लिया। फिर घर में आके इधर में काम कर रहा था, कलर का पेंटिंग का काम। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है ना। हाँ जी। फिर यहाँ आके सर के साथ जुड़ गया मैं। अच्छा, ये हमारा मिरर का फ्रेम है। यहीं पर लोकल हम लोगों ने लोकल काठ से बनाया है। ये फ्रेम को पहले काठ से बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने खुद से पेंट किया है। ओके। अभी इसमें मिरर डालने के लिए बाकी है, मिरर और हैंगर डालने के लिए। और इसके बाद हम रूम में डाल सकते हैं। इस तरफ है हमारा आर्ट स्टूडियो। अभी फिलहाल तो यहाँ पर थोड़ा गंद मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फाउंटेन प्लस एक्वेरियम बना रहा है ओके। गेस्ट के लिए यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया थोड़ा शांत टाइप का हम लोगों ने क्रिएट किया है, जैसे टूरिस्ट को थोड़ा बहुत रिलैक्स मिले। इसलिए हम लोग यहाँ पर फाउंटेन प्लस एक्वेरियम मछली वछली डालेंगे इधर में। फिश एक्वेरियम फिश। वाओ वाओ। जैसे ही एक्वेरियम खत्म हो जाएंगे, पूरा सेटअप यहाँ पर आपको पूरा ओके एकदम मिल जाएगा सेटअप। ओके। पूरा फुल सेटअप में यहाँ पर बैठ के गेस्ट लोग ये जैसे ये हमारा काइंडनेस रॉक। यहाँ पर हम लोग गेस्ट को रॉक्स और पेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी मर्जी से पेंट करते हैं। Okay. 3D designed football logo, which represents the. We have 2 football teams here. One is girls team and another one is the boys team. And we also take the interested tourists for playing football if they have enough time and if the ground is available on that day. As I told you, it's a eco-friendly building. We do not burn any plastic and we discourage burning of plastic, and we convert the plastic bottles either into some art or we make eco bricks out of it. These are basically plastic bottles in which we have dumped and tightened more plastic into it, and now it becomes like a brick and it can be used to make a stool, a table, a rack or a wall, and there are even houses made of these bricks. ओके। So we do not dump any plastic, we don't burn any plastic. ओके। So this adjoining section is dormitory for the drivers who come with the passengers. We have this arrangement for their stay. These are bunk beds. In fact, you know, some drivers tell me that their room is the best room because we have Kanchenjunga view. Exactly. Most important thing when we travel to hills is availability of hot water, hot Right. running water. So this is the central geyser, Okay. which is a solar geyser,
This is 750 liters, and we have another one on the other terrace which is 250 liters, and it has an electric backup also. আচ্ছা, So when the sunshine is not enough to heat up the water, then in those days we can use the electric backup. ওকে। তো আঙ্কেলের মুখ থেকে তো পুরো প্রপার্টির কনসেপ্ট কী কী আছে সব কিছু শুনে নিলে। এবং আরেকটা কথা আমি বলি, এখানে 400-রও ওপর ভ্যারাইটির গাছ পাবে। এবং এগুলো দেখো, যেমন রঙের ডিব্বা বা প্লাস্টিক বোতল থেকে আরম্ভ করে কোনো কিছু এখানে ডিস্ট্রয় করা হয় না, সমস্ত কিছুতে গাছ লাগানো হয়। এটা খুব ভালো লাগলো। আর এত গাছপালা রয়েছে, যেটা আমার জন্য খুব ভালো। আর চারিদিকে এরকম সোলার লাইট দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটা সিঁড়িতে সিঁড়িতে। তো চলো একটা রুম দেখিয়ে দিই যেখানে এসে মানুষ থাকবে। তো এই যে তাসি ডেলেক সেওয়ারো এই সমস্তটাই যেগুলো আঙ্কেল বলছিলেন, প্রত্যেকটাই হচ্ছে নেপালি কমিউনিটির। দেখো নামটা, এখানে যা যা নাম দেখতে পাবে সবগুলো হচ্ছে নেপালি কমিউনিটি, আলাদা আলাদা ভাষার। নমস্তে মিনিং হচ্ছে নমস্তে। বিশাল বড় বড় বেড রয়েছে এখানে, 3 থেকে 4 জন এই বেডে থাকতে পারবে আরামসে। হ্যাঁ, এখানেও একটা কিং সাইজ বেড রয়েছে। এবং এই রুমের স্পেশালিটিটা বলে দিই, দেখো ওয়াল পেন্টিং করা হয়েছে এবং লোকালরাই করেছেন, দারুণ পেন্টিং হয়েছে। এবং আর একটা স্পেশাল জিনিস যেটা ওপরে দেখলে মিরারের চারিদিকে এরকম পেন্টিং করা, দারুণ দেখতে। এবং ওপরেও সমস্ত কিছু রেডি হয়ে রাখা আছে হবে। আর এখানে দেওয়া রয়েছে ডেস্ক টাইপ দেওয়া রয়েছে, আর বড় বড় উইন্ডো আছে। এই দিয়ে জঙ্গল ভিউ, আর এই দিকের উইন্ডো দিয়ে মেবি কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পাওয়া যাবে। বাইরেটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, বাইরেটা দেখতে পাওয়া যাবে। সুন্দর লাগছে আজকে, ওয়েদার এত ক্লিয়ার। দারুণ রুমগুলো, বিশাল স্পেশিয়াস। আর ওয়াশরুমটা একবার দেখিয়ে দিই, একেবারে নিট অ্যান্ড ক্লিন উইথ সেন্ট্রাল গিজার, যেটা দেখলেই। আর একটা কথা অবশ্যই বলবো, এই গদিগুলো খুব সফট এবং খুব ভালো কোয়ালিটির দেওয়া রয়েছে। তো দারুণ প্রপার্টি। প্রত্যেকটা রুম কিন্তু একই কোয়ালিটির রুম, তাই জন্য প্রত্যেকটা ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি না। আর একটা বলে দিই, রুমগুলো ভীষণ ভাইব্রেন্ট, কালারফুল এবং খুব এয়ারি। তো ভালো লাগবে এখানে এসে স্টে করলে। हमारे पास टोटल 7 रूम्स हैं, जिसमें से कि 3 रूम्स कॉट शेयरिंग है, जिसमें 4 लोग रह सकते हैं, और बाकी के 4 रूम हमारे पास ट्रिपल शेयरिंग है, जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड है, और उसमें 3 लोग रह सकते हैं। और जो हमारे टैरिफ है नॉर्मल, वो है 2700 फॉर डबल ऑक्यूपेंसी एंड 3450 फॉर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी एंड 3800 फॉर कॉट शेयरिंग। ठीक है। और फूड का है जो पैकेज, वो 650 पर हेड का है, और ये हमारे सीज़न के रेट हैं। और ऑफ सीज़न में हम डिस्काउंट कर देते हैं, जो कि 15% से लेके 50% तक होता है। तो ये हमारे रेट्स हैं। और अभी हमने कुछ नई स्कीम्स निकाली है सीनियर सिटीज़न के लिए, जिसमें कि हम सीनियर सिटीज़न को 25% के आसपास का डिस्काउंट दे देते हैं। और वो ये जो डिस्काउंट है, ये सब अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स पे डिपेंड करता है, और सीज़न पे डिपेंड करता है, ऑफ सीज़न है या पीक सीज़न है, ये उस पे डिपेंड करता है। एक मतलब प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी है, तो हम फ़ोटोशूट वगैरह करवा देते हैं। जैसे कि एक पैकेज है हमारा 500 का, उसमें 3 रील्स, 50 फ़ोटो और एक वीडियो हम शूट करवा देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर ही। दूसरा पैकेज है हमारा 1000 रुपीज़ का, उसमें 5 रील्स, 50 फ़ोटो और एक वीडियो करवा देते हैं। वो अलग अलग लोकेशन पे करा देते हैं, फ़ोटोग्राफ़र आप लोगों के साथ जाएगा, जो कि छांगे रिवर हो गया, छांगे वाटरफॉल हो गया, और हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पे गेस्ट कहेगा उस हिसाब से वो फ़ोटो शूट कर देते हैं। जैसे कि किसी को प्री वेडिंग शूट करवाना होता है, या अभी जैसे हमारे पास एक डेस्टिनेशन वेडिंग है, ऐसे किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बुकिंग करवानी है, फ़ोटोग्राफ़र चाहिए, तो मिल जाता है। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ओके, थैंक यू सर। এই প্রপার্টির মধ্যে যেটা বেস্ট জায়গা, সেখানেই আমরা এখন বসে আছি, ডাইনিং স্পেস। আজকে শুধুমাত্র এই প্রপার্টি ভিডিওটা তোমরা দেখবে, আর সারাদিন আমরা কি করছি না করছি সেটা নেক্সট পার্টে আসবে, যেহেতু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এবং ডিটেলসে আমরা সমস্ত কিছু দেখিয়েছি, ইনফরমেশন দিয়েছি। তার জন্যই আমরা ভাবলাম নেক্সট পার্টে নেক্সট যা যা করছি আসবে। একদম। তো এই প্রপার্টিটা ভালো লেগে থাকলে, ওনাদের গল্প ভালো লেগে থাকলে, ডেফিনেটলি ভিডিওটাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর বেল নোটিফিকেশন অন করে দিও। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বেশ একটু কস্টলি প্রপার্টি, তো স্ট্যান্ডার্ড প্রপার্টি এবং স্ট্যান্ডার্ড সব কিছু স্ট্যান্ডার্ড। চলো আজকের মতো টাটা, আর নেক্সট ব্লগটা মিস করো না। টাটা। টাটা।